hello, Sat Sri Akal. You all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव, and today I have with me two of the very talented actors of the industry. Yes, I'm talking about not only the actors, they have been assistant directors also. Yes, I'm talking about Mr. Gagan Arora and Mr. Arjun Mathur who are with us right now. Arjun, Gagan, welcome to Punjab Kesari Navodaya Times. कैसे हैं आप? Thank you, Thank Namita. you. Pleasure to be here. अच्छा, आप दोनों के बारे में जब मैंने पढ़ा मैंने कहा यार दोनों असिस्टेंट डायरेक्टर निकले तो मतलब वाह आज तो कमाल हो गया. और ये बात हमने कभी डिस्कस नहीं करी है, आज ही हमें बताइए. या we've been मुझे told by आज other मुझे people. करेक्ट मुझे अभी इंटरव्यूज में पता चला. कभी या कभी इंटरव्यूज में कई फैक्ट्स ऐसे पता लगते हैं ना, हमारे अंदर के हिडन टैलेंट सामने आ जाते हैं. अच्छा, हमने ये भी किया था. ऑल राइट. या ओके, करेक्ट. सो टॉकिंग अबाउट डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वैसे तो टाइटल से ही पता लग रहा है हमें सब कुछ, हम सब अवेयर भी हैं इस चीज को लेके, खास करके दिल्ली की तो अगर मैं बात करती हूँ तो ये हम्म. समझाने की क्या जरूरत पड़ गई, ये बता दो आप प्लीज. अब समझते ही नहीं है लोग तो मतलब Correct. you know. Yeah. So, but yeah, ओके. I mean, actually, honestly, yeah, I know we've seen many PSAs वगैरह हमने काफी देखे हैं जरूर. दारू पीकर हाँ. मदिरा पीकर गाड़ी नहीं चलाना चाहिए अच्छा, वगैरह. ओके. But I think it's just never been told like this in like a light-hearted हाँ. manner like this, which is also entertaining and you know kind of spooky and mysterious. And इसमें काफी elements हैं इस फिल्म में जो आप इसको एक जॉनर में कैटेगराइज नहीं कर सकते. तो हाँ, बस एट द एंड ऑफ इट सच बात यह है कि दुनिया में सिर्फ इतनी गिनी चुनी बातें हैं बोलने लायक, और बस उनको बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं. तो हम भी वही कर रहे हैं. सही कहा, और बहुत खूबसूरती के साथ आपने कहा कि बातें कई सारी हैं, बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं. गगन, व्हाट यू हैव टू ऐड ऑन दैट, और जैसे अभी अभी अर्जुन ने कहा उस पर आपका क्या कहना है बेसिकली. सही कहा, बहुत अच्छा कहा इन्होंने. मतलब डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव इज समथिंग, जैसा कि आपने बोला, इसको बोलने की क्या जरूरत पड़ गई. आई थिंक देयर इज कभी भी कमी नहीं पड़ती है इस चीज को बोलने की, क्योंकि हाँ, मतलब हाँ, काफी चाटे बहुत पड़े हैं. चाटे भी पड़े हैं तब तब आई मीन लाइक. अच्छा, वैसे मैं कमेंट पढ़ रही थी जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जो मैं जरूर कहना चाहूंगी यहाँ पे. दो चीजें मिक्स की गई है ना इसमें, जैसे हाथ में ही पकड़ने का बोले तो बम्बई का लैंग्वेज है ना, मुंबई है, और जानता है मेरा बाप कौन है, ये दिल्ली वाला लैंग्वेज है ना. तो ये अमेरिकन ना करेक्ट. मुंबई दिल्ली बहुत अच्छा लगा. सो थैंक लाइक गगन, ये तो नजर आ रहा है दैट यू आर द स्पॉइल्ड ब्रैट, आप पायलट हो, पैसा वैसा खूब उड़ाते. सच में कभी ऐसा किया है, वैसे आपने कोशिश की है ऐसा करने की? यू. नहीं, कभी नहीं. मतलब ये तो नहीं करना चाहा मैंने ऑन पर्पस कभी. कि पुलिस वाले को जाकर ऐसे हाथ पकड़ के बोला, हाथ नहीं पकड़ने का. हाथ नहीं पकड़ने का, या जानता मेरा बाप कौन है. बट मैंने देखे हैं, मैं अपनी लाइफ में बहुत ऐसे लोगों से मिला हूँ जो काफी हाँ. स्पॉइल्ड हैं, एंड हाँ. who know that they are powerful, and they know that they can use it. तो यूज द it पावर. is not a, use their power as in, it is not a very good personality trait to have, but still a lot of people do have it, and I'm portraying one of them, तो बहुत मजा आया करने में. So I want to ask you, both of you, like, how happy are you, despite of what people are saying about the film, with your respective characters, and how much justice did you do with the character? Starting with you, Arjun. well, to me, like the characters so far removed from anything I know or understand. It's at the end of it, it's a director's vision, you know. जय शर्मा ने Definitely. हमारे जो डायरेक्टर हैं उसने इस तरह विजुअलाइज किया इस कैरेक्टर को. उन्होंने सोचा कि वो इसको किस तरह के कपड़े पहनाना चाहते हैं, कैसे बाल देना चाहते हैं, कैसे ये बात करेगा, क्या जेस्चर्स करेगा, सब उनका है. तो Hmm. to me it's like as long as my director is happy, that's my job done, to be honest. Very very often, Very you know, nice. when you don't have your own reference point for a character, होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये आप कर क्या रहे हो, you know. लेकिन but it's not, an actor doesn't always need to understand, you know, you're part of a much bigger process. Or when I saw the film I was like, I came away very impressed. So yeah. And Gagan, how happy are you with your respective character that you have played in your style, basically? I'm very happy. I'm very, very happy. And again,
it is it is a variation of a character uh, that I have somehow played, but it again, जैसे उन्होंने अर्जुन ने बोला, the way Jay has interpreted the character and presented it to us, it is so interesting कि उसके बाद बहुत clear हो जाती है image of that character. There is not much to छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कहते हैं ना कि he's made such a clear picture of the character in his head, और जिस तरह से उन्होंने हमें भी डिफाइन करी ये चीजें, that बहुत ऐसा लग इंटरेस्टिंग तरीके से he has presented the character and, to us and in the film also. So I am very very happy. कि डार्क कॉमेडी भी उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ इंडस्ट्री में, तो आपको किस तरह के मैसेज आए हैं ना आपका किरदार देखने के बाद, दैट आपने कितना अच्छा किया, और दूसरा आपको लगता है कि इट विल बी वेल रिसीव्ड बाय द ऑडियंस? I hope so. I personally really enjoy dark comedy as a genre. I think life is Yeah. like life is the closest genre Comedy. that life itself is. I think it is a dark comedy. You know, अच्छा. it's like yeah. I mean, our biggest tragedies in our lives are actually the most hilarious things when you look back at them. You know, Yeah. मतलब but स्ट्रेंजर्स को लिफ्ट दे दें आगे से कि नहीं दें, ये भी बता दो प्लीज. मैंने तो दी है, वो आपको जज करना पड़ेगा। आप इस अतरंगी जैसे को रात के बीच में आपने रोड पे खड़े देखकर लिफ्ट दे दी, है आपकी गलती। बट यू नो बट या आई मीन यू हैव टू बी अ जज ईच टाइम। नहीं, आई लव डार्क कॉमेडीज। आई ट्राई टू व्हेनेवर आई कम अक्रॉस एनी, I did one a few years ago called Bridge Mohan Amar Rahe, which I personally is one of my I loved it. I've done one earlier this year which should be out next year. So, yeah, I hope I get to do more. And what Gagan has to say about that, the same genre? Same. I love it. I think it is one of the most unexplored genres in terms of mainstream cinema. And again, that is what makes this film very interesting, because to choose dark comedy to put across a message like "Don't drink and drive," it is a very हाँ. interesting mixture. And I think that is what people are loving. तो आप दोनों की कामराडरी के बारे में पूछना चाहूंगी। पहले तो ये बताओ, मतलब आप लोग पहले कितनी बार मिले थे, रिहर्सल कितनी बार की थी पहले? आप लोग अपनी क्राफ्ट में तो मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल एकदम ऑसम हो, एक्सीलेंट हो, तो आपको ज्यादा रिहर्स करने का जरूरत पड़ा था या नहीं? ऐसा नहीं, मेरे को तो था थोड़ा बहुत। मैं I mean, नहीं but on समझ पाई थी, ये भी कॉमेडी था। we met, but हम सिर्फ एक बार मिले शूट से एक पहले। बार में एक बार मिले अच्छा. थे हम जय के घर पे, रीडिंग करी हमने, थोड़ा बहुत डिस्कशन ये वो, और आफ्टर दैट वी मेट ऑन द शूट। तो बस कूद गए अंदर एक्चुअली। करेक्ट। या आग में गिरा दिया गया yeah. basically. As it happens very often, you have to, I mean, Yeah. होता ही है ऐसी लाइन में, you can't More expect. often than not, it's like Yeah. this only. Yeah. Correct. Ajay, since Arjun is there from a long time in the industry now, if I'm not wrong, from 2004, I believe, है ना? And you are, I was going to, sure. and you are a spoiled brat. नहीं, you are मतलब like a rising star, Gagan. अरे मेरे पे ये जो लांछन लगाए जा रहे हैं मेरे पे। Arjun is in the industry for a long time, Gagan, and you are a spoiled brat. तो ये तो गलत है यार। हाँ, जी हाँ जी बताइए। तो मतलब जब वो एक्टिंग करते हैं तो उनसे देखकर भी कुछ सीखने मिलता है आपको, गगन? एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और इट इज नॉट जस्ट इन एक्टिंग आल्सो, द वे यू अप्रोच लाइफ, क्योंकि मोर देन एक्टिंग यू आर नॉट एक्टिंग ऑन सेट। तो वो जो गैप्स में चीजें दिखती हैं, तो वो देखकर मुझे बहुत मजा आता है। एंड इट वाज नॉट जस्ट विद अर्जुन, विद जितेंद्र सर आल्सो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू कैन पिक एज एन एक्टर। जैसे I was just telling that how disciplined Arjun is with his time, and even after a very long time, he's even after, as you said, he's been since 2004. A lot of people, if they've spent that span of time, they started to take things lightly, and they might not respect different mediums as much as they would. But what I've seen, that is something that I need to learn. That even on the rehearsal day, he was not even a minute late, and to the amazement of me and our director. Similarly with Jitendra sir, he had the whole crew laughing.
वो सबको हंसा के रख रहे थे, एंड इन द मिडल ऑफ द नाइट nobody even thought about sleeping because he was talking to everybody constantly and making sure that everybody was fresh and everybody's in a good mood. And so was Jay, our director. uh, he all of them have individually, I can talk about myself, so made me very comfortable on being on this set, क्योंकि मैं नया हूं, तो जैसे कि स्पॉइल्ड ब्रैट हूं, तो मेरे को तो बहुत कंफर्टेबली रखा गया। मानते हैं ना? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। तो अर्जुन, आप किनसे इंस्पायर हो पंक्चुअलिटी के मामले में? यार honestly, I think it's just a leftover of my assistant director days, really. Assisting days, correct. You know, Yeah. the actual truth is that आपको एक बार once you have been on the other side and you know the kind of pressure that a production and director can be under, and once you have seen firsthand how much power an actor actually holds to delay the shoot or move it forward on time. I don't know. और ये training की बात है. It's very important to me to be as efficient as I can and try to save my director producer as much money as I can by being as fast as I can at my work. You know, बाकी चीज मैं promise नहीं करूंगा कि हाँ मैं ये भी शायद मांग लूंगा, वो भी शायद मांग लूंगा, लेकिन काम के मामले में मैं टाइम पर आपको डिलीवरी करके दूंगा। क्या बात है? You know, आपको कुछ डिले नहीं होगा मेरी वजह से। Simple as that. So it's really that. In fact, whenever somebody asks, you know, in interviews also, a lot of people ask, "Hey, what advice would you like to give actors who are starting out and all?" My only piece of advice is be punctual. That's it. It's the only thing I have to say. बाकी सब आप संभाल लो, बस टाइम पर हो ना, you know. Yeah, really. और ये अच्छी बात है। मतलब जनरली अगर कभी हम किसी से पूछते हो, हम तो क्या ही एडवाइस कर पाएंगे, जनरली कह रही हूँ, बट आप ये कह रहे हो तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। Simple, yeah. Since you have been into the shoes of a director also, assistant director होना भी कम बड़ी बात नहीं होती है, and now you have been acting for long, both of you. So मुझे ये बताओ कि what is the best part of your life being an actor, जो आपको लगा कि यार ये तो मुझे सिर्फ एक्टर बन के ही मिल सकता था? गगन, मैं आपसे पहले शुरू करूंगी। The span has been smaller, but मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है to get into somebody else's shoes. I find it borderline creepy also sometimes on myself that suddenly I am trying to become somebody else. I am losing मैं जो भी अपने ethics थे या संस्कार थे, whatever it is, I'm keeping it aside. Whatever I've been, जैसी मेरी upbringing हुई, वो सबको side रख के I'm trying to be somebody else now. And in that being all of that, there is one moment on set where you are just there, and when you experience that moment, you feel like, oh, I cannot have that rush anywhere else. So it might not be a good take or it might be a bad take, but as an actor, when I experience that one moment where I am being the character, वो बहुत मजा आता है, and I don't think I can experience that in any other profession. Nice. And Arjun, for you? Nothing as wholesome as Gagan's answer. But I don't know, like free gifts and travel, you know. ये तो मुझे तो बेस्ट लगता है, ये पता है, मैं बोलने वाली थी। ये honest answer है, ये honest answer। Yeah. I mean, जब बच्चे थे तब क्या सोचा, हाँ यार बड़े होके हीरो बनेंगे, फिर फ्री में इधर उधर घूमेंगे बस, you know. हीरो तो सबको ही बनना चाहते हैं, हीरो हीरोइन तो सब बनना चाहते हैं। हाँ, I mean whatever, of course then you grow on your journey and all, but that's the initial thought, you know. And yeah, I don't know now, but I don't know, I think it's a kind of satisfaction जब से, I mean this is what I always wanted to do. So one thing I can say for sure is that I would not have the satisfaction that I have from my life currently. I would not have that doing anything else other than being an actor. So yeah. तो मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब ना आपको आंखें बंद करनी है, बिल्कुल सोचना है और दे देना है, ठीक है? क्योंकि इसका जवाब मुझे पता है, मुझे सबसे सच नहीं मिलता है, ठीक है? अच्छा, तो वो ये कि आपने ये प्रोजेक्ट क्यों चूज किया था, जो सच्चा सच्चा जवाब, उन्होंने सच में आंखें बंद कर ली। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लव इट। I go first, right?
या हाँ प्लीज बिल्कुल, प्लीज। तो चूज किया ये वाला, ये डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं चुना, इस प्रोजेक्ट ने मुझे चुना। But listen, why? Hear me out. Hear me हाँ out. My हाँ, partner, Tia Tejpal, is the production designer on this project. ओके, Her brother, Karan Tejpal, is the writer of this film. क्या बात, Her other brother, Kabir Tejpal, was the DOP of the film. वाह, And together, the three of their very close friend, Jay Sharma, is the हाँ producer, director of the film. हाँ, तो एंड मेरे हिज पास, पार्टनर हाँ, yeah, my एंड own हिज partner. पार्टनर द कॉस्ट, नो Yes, इवन and his जैस। partner and his partner was the costume designer of the film. ओ तो अच्छा, I ओके, mean, इससे ज्यादा तो बस कोई बंदूक ही रखता तब, that would only that would make it more forceful than this. Not forceful, but only that would make it more के I just didn't have an option. हाँ वही मैं कह रही, फैमिली प्रोजेक्ट हो गया ना आपका तो Yeah, बिल्कुल, yeah. इसलिए सच्चा जवाब, वेरी नाइस, नजर उतार लेती हूँ मैं इस बात को बिल्कुल। गगन, आपने क्यों चूज किया? मैं I wanted to be somebody's partner, so I नहीं, I'm just kidding. uh, I actually I genuinely been a big admirer of Arjun's work, of Jitendra हाँ sir's work and Jay's work. तो मेरे को तो आई फाउंड इट क्या ये तीन लोग साथ में काम कर रहे हैं क्या, तुम मेरे को घुसना है भाई, मेरे को प्लीज टेक मी अलोंग ऑन दिस जर्नी, एंड लकीली इट हैपेंड। तो मुझे तो बहुत मजा आया। No, वेरी it was a नाइस, lot of fun. चलो Lot of fun. ये Yeah. एकदम एक्टर वाला जवाब था यार, बहुत कुछ सीखने मिला और मैं बहुत इंस्पायर्ड था अर्जुन से, नहीं जय बट से। जेन्युइन जवाब है यार, अब इसमें मैं क्या Nobody झूठ है बोलूं। genuine है, I know, I can tell he's a genuine boy, I know he's, yeah. अच्छा, और अर्जुन का जो पहला वाला था उसका तो वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था, है ना, वो सरासर झूठ था। नहीं 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 वेल नहीं। गाइस, तो थैंक यू तो कह ही देती हूँ, थैंक यू सो मच, एंड आई होप कि लोग इससे कुछ सीखे भी और इसे पसंद भी करें, ऑफ कोर्स। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस इन पंजाब के टाइम्स, अर्जुन, Thank गगन, you. Thank you. थैंक यू थैंक्स, Pleasure. थैंक बाय बाय, यू, बाय बाय।